जैसे हमारे मोदी जी हैं, फार्मर्स कब से कह रहे हैं कि ये जो बिल्स हैं इनको प्लीज़ आप वापस ले लीजिए, लेकिन वो हैं एडवेंट पर्सन बिकॉज ही इज़ नॉट विलिंग टू चेंज एट एनी कॉस्ट. Hi friends, how are you doing today? Thanks for joining me for today's vocabulary session. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ vocabulary that is going to be very beneficial for you, especially from writing perspective. If you wish to target somewhere close to band 7 in the Ielts writing, then these words are really going to help you. As you know that आइल्स राइटिंग में 25% आपका जो स्कोर होता है वो लेक्सिकल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है. दैट मीन्स यू हैव टू यूज़ लिटिल अनकॉमन वोकैबुलरी. लेकिन वो वोकैबुलरी ऐसी वोकैबुलरी मैं आपको सिखाऊंगा जो रिपीटेटिव है. दैट मीन्स बहुत सारे ऐसेज में आप यूज़ कर सकते हैं. ऐसे नहीं है कि एक वर्ड याद किया और उसको शायद 100 में से एक ऐसे में आप यूज़ कर पाएंगे. ऐसे वर्ड्स बर्डन बन जाते हैं और ज़्यादातर आप रिटेन भी नहीं कर पाते और करेक्ट यूजेज भी नहीं समझ पाते क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली यूज़ ही नहीं हो रहे. लेकिन आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज वर्ड्स दैट आर क्वाइट रिपीटेटिव इन नेचर व्हेन इट कम्स टू आइल्स राइटिंग, और हर दूसरे ऐसे में आप इनका यूज़ कर सकते हैं. क्या है ये वर्ड्स और कैसे आप इनको यूज़ कर पाएंगे, क्या है इनका पार्ट ऑफ स्पीच और क्या है इनके सिनोनिम्स, यही सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आज के इस वीडियो में. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ गिव मी अ थम्स अप एंड शेयर the link of my channel with your other friends as well. If you are new here, please press the subscribe and bell button so that you can get the notifications of my newly uploaded videos. Let's begin with the very first word of the day and it is abandon. Abandon एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इनफैक्ट एक बहुत ही डायरेक्ट इसके साथ एसोसिएटेड ऐसे है स्कूल ड्रॉप आउट्स, कि बहुत बच्चे हैं जो अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं करते, बीच में छोड़ देते हैं. एंड यू कैन यूज़ दे अबैंडन देयर स्टडीज़, मतलब इन बिटवीन छोड़ देते हैं. चिल्ड्रन अबैंडन देयर पेरेंट्स, आजकल देखा होगा बुजुर्ग पेरेंट्स हो जाते हैं, उनकी कोई देख रेख नहीं कर रहा, उनकी केयर नहीं करना चाहते, दे अबैंडन देयर पेरेंट्स. इट्स अ वर्ब and the synonyms can be as easy as leave or give up. The next word that I have for you is abundant. Abundant is something that is in huge amount, available in huge quantity. Abundant resources अगर हम ऐसे एसोसिएट करें ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज के साथ, फॉर एग्जांपल सनलाइट, इट्स इन अबंडेंस, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है. अबंडेंट, एडिक्वेट, surplus, sufficient, enough, ample, कई सारे इसके synonyms हैं. The next word is adamant. Adamant is something or someone who is not willing to change. जैसे हमारे मोदी जी हैं, फार्मर्स कब से कह रहे हैं कि ये जो बिल्स हैं इनको प्लीज़ आप वापस ले लीजिए, लेकिन वो हैं adamant person because he is not willing to change at any cost. तो शायद इधर किसान जो हैं वो भी adamant हैं, वो भी अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है, इसीलिए इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा. वेल, लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज एडवोकेट. एडवोकेट आप अपने एसेज में बहुत कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हैं. आई एडवोकेट द ओपिनियन. आई एडवोकेट मीन्स आई सपोर्ट. सो किसी आइडिया को सपोर्ट करना या फेवर करना, किसी की ओपोजिशन में होना आपको बना देता है ओपोनेंट. जब किसी चीज़ का आप फेवर करते हैं आप बन जाते हैं प्रोपोनेंट. एंड यू एडवोकेट, दैट मीन्स आई सपोर्ट द आइडिया. इट्स वेरी यूजफुल वर्ड एंड ट्राई टू यूज इन योर आइल्स राइटिंग. द नेक्स्ट वर्ड विद मी इज apparent. Apparent is once again that you can use in every essay and every task one. Apparent is to practice online for your IELTS preparation. Contact us today. We have a wide range of online programs that you can choose from and that would ensure your success in the IELTS exam. And your is clear, obvious, it is apparent, the most apparent reason, evident, जो साफ नज़र आ रहा है, for that we use apparent. The next word is authentic. Authentic, authenticate, authenticity, these are all different part of speeches. Authentic is an adjective. Authentic का मतलब होता है रियल होना,
genuine होना, असली होना. People look for authentic information in newspapers क्योंकि सोशल मीडिया पर उनको पता है कि जो वो इंफॉर्मेशन है वो अनऑथेंटिक है, मतलब वो जेन्युइन नहीं है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता. सो authentic is something that you must remember. Another one is, may sound very common but बहुत rarely students ऐसे use करते हैं, advantageous. advantages सब use करते हैं, लेकिन advantageous बहुत rare use करते हैं. So try to use this. It is going to be very beneficial for children. It is going to be very advantageous, right? So beneficial, advantageous, helpful, ये सभी synonym रहेंगे. The next word is colossal, one of the most repeated Ielts word. Many students use it. If you don't use, try to use it. It's a beautiful word that would help you to express when you have to say something that is in huge quantity, something big in size, like enormous, mammoth, huge, giant, colossal information. Internet पर कितनी information है, बहुत सारे हैं, something like that. Moving on to the next word, which is competent. Competent, not too many students are comfortable with this word. जैसे competitive होता है वो उसे इसका part मान लेते हैं, but competent is someone who is having the aptitude, having the capability. He is a competent candidate, मतलब इसके अंदर potential है that he can get this job. So competent means a qualified or a capable person. The next word is conventional. Conventional is customary or traditional, something that's been in use for a long period of time. We can say it's conventional way of doing something. Conventional sources of energy. It's an adjective, बहुत सारी चीज़ों के साथ यूज़ होता है. Conventional thinking, orthodox, narrow minded होना, उसके लिए भी हम conventional word यूज़ करते हैं. और इस word का counterpart, that means इसका opposite जो बहुत frequently यूज़ होता है, that is contemporary. Contemporary का मतलब होता है इसके बिल्कुल उलट, modern. Conventional is something traditional or customary, and contemporary means something that is really very modern. The next word is courteous. It's an adjective to express or define one's personality, that he is a very courteous person. Courteous mean polite person. And आप जब foreign countries में जाएंगे तो आप notice करिएगा, किसी भी सुपर स्टोर में, मॉल में आप जाते हैं, and the representatives are appointed there to deal with any trouble that the customers face to ensure that they get the customer satisfaction. Let's move on and check another word, that is comprehend. It's a very important word. Comprehend is to understand. I hope कि मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ आप comprehend करते जा रहे हैं. To understand, to grasp the knowledge or interpret कर पाना is also the same. Comprehend and comprehension और comprehensive, ये थोड़े से अलग अलग वर्ड्स बन जाते हैं. comprehension तो एक पैराग्राफ टाइप हो गया जो हम अपनी रीडिंग टेक्स्ट में करते हैं, और यहाँ पर comprehensive भी एक अच्छा वर्ड है टू रिमेंबर. इंडिया हैड अ comprehensive विन ओवर ऑस्ट्रेलिया. दैट मीन्स वो जो विन थी, अगर मैं क्रिकेट मैच की बात करूँ तो किसी एक चीज़ पे कॉन्फाइन नहीं थी, सभी एलिमेंट थे. comprehensive नॉलेज, उस बंदे को कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है, ये नहीं है कि एक चीज़ की नॉलेज है दूसरी की नहीं है, सभी चीज़ों की उसको नॉलेज है. सो इट्स समथिंग कॉम्प्रिहेंसिव. एंड फाइनली आई हैव अ वर्ड दैट इज़ कंटामिनेट, क्योंकि बहुत सारे रीडिंग पैसेजेस में और आपको राइटिंग टास्क में पोल्यूशन रिलेटेड रीड करने को मिलेगा या एसेस लिखने को मिलेंगे, एंड इट इज़ गुड इफ़ यू नो कंटामिनेट. Contaminated, contamination, it can be used as a synonym for pollution. और tainted भी ऐसे word use होता है, जैसे water resources are getting tainted, that means बर्बाद होते जा रहे हैं because उसमें industrial waste या dispose किया जा रहा है. So this is pretty much all in today's session, and if you really like this vocabulary video, tell me in the comments section and I will definitely come up with more videos for you and help you in improving your vocabulary to help you to score 7 in your speaking, writing and improve your overall English. Thank you for watching today's video, my dear friends.